फर्स्ट क्या करना है, अपने बालों को वेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रे। उसके बाद मुझे अपने बालों को क्रंच करना है अपलिफ्ट करके, और साथ में मैं ये यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द स्प्रे फिक्सर। अब इसको मैंने इस तरीके से स्प्रे करना है कि मेरे बाल क्रंचिंग पोजीशन में होल्ड कर दे। और अगर आपके बाल तब भी नहीं होंगे उस तरीके से कर्ल, तो आपको ऑब्वियसली कर्लर यूज करना पड़ेगा। और अभी मैंने इसको मेसी करने के लिए क्या करना है, स्क्रंच तो मैंने कर लिया है। अब देख रहे हैं इसमें वेव्स भी आ गए हैं जैसा मैं चाह रही हूँ। अगर आपकी ड्राई है तो उसको पहले मॉइस्चराइज करना ना भूलें। मैं इसके लिए ये फ्रोस्टेड कोकोनट स्नोबॉल, इट्स अ परफेक्ट फॉर योर स्किन, सो ये मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा, ये ग्रीसी नहीं करता है और बिल्कुल परफेक्ट कर देता है जहाँ जहाँ पर स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए। सो इसको मैंने कुछ हाफ मिनट दे दिया है। नाउ अब मैं बेस रेडी करती हूँ। बेस रेडी करने के लिए मुझे नेचुरल बफ अप्लाई करना है, जो मैंने आपको दिखाया। इसके लिए मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने ब्रश की मदद से। ये बिल्कुल नेचुरल लुक देगा, ना कि ज़्यादा ओवर वाइटिश दिखाएगा, सो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। इट्स डन। आप देख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे आपके दाग धब्बे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कलर करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए आप कलर करेक्शन यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास इन केस नहीं है, ड्यू टू लॉकडाउन जैसे अभी बाहर नहीं निकल सकते, तो आपके पास कोई लाइट शेड का लिपस्टिक होगा तो आप उसको अप्लाई करके बेस बना सकते हैं कलर करेक्शन के लिए। सो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ एरिया मेरा डार्क लग रहा है। अब मुझे कंसीलर अप्लाई करना है अंडर द आई एरिया। अब मैं इसको सेट करने के लिए पाउडर अप्लाई करूंगी मेबलिन का। तो उसके लिए मैं ये भी मेबलिन का ही यूज़ कर रही हूँ कंटूर। दिस इज लुक लाइक दिस। अब मैं इसको कंटूर करती हूँ।
नाउ यू कैन सी कंट्रोलिंग दिस नाउ। अब मुझे इस पर हाइलाइटर अप्लाई करना, तो इसी के अंदर हाइलाइटर है। दिस इज द हाइलाइटर। ये डुअल है एक्चुअली, अगर हम इसको देखेंगे इसमें कंट्रोल प्लस हाइलाइटर है एक ही स्टिक के अंदर। सो इट्स गुड फॉर एवरीवन जिनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो ये बहुत ही अच्छी स्टिक है इसके लिए। तो मैं आईब्रो के लिए इसे ब्रश से इस वैक्स को लूँगी इसकी बैक साइड से और इसको अप्लाई मैं इसमें ये वाला शेड अप्लाई करूँगी बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि इसमें लाइट ब्राउन नहीं है। सो मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी, जैसे आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट का है ये आईब्रो क्लियर आईब्रो जेल। इससे हमारी जो आईब्रो बिल्कुल फाइनल सेट हो जाएगी। आप इसे कह सकते हैं बिल्कुल ऑरेंज है, डस्टी ऑरेंज कह सकते हैं। ये यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें बिल्कुल नेचुरल लाइट लुक है। और इसके साथ मैं ये वाला ब्रश अप्लाई करूँगी। क्योंकि उनका जो शेड है बहुत ही नेचुरल है, तो हमें भी बिल्कुल लाइट डस्टी शेड्स ही लेने हैं। इसको अच्छे से स्मूथ करना है। नेचुरल इसमें पिंक पर्पल टोन में जो एक और शेड इन्होंने अप्लाई किया है जैकलिन की आई मेकअप में, तो मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ। अब मैं जो ब्रश लूँगी वो पहले से छोटा लूँगी। वो पहले मैंने ये लिया था, अब मैं ये वाला लूँगी स्मॉल साइज, आपके पास जो भी हो अवेलेबल। सो मैं ये वाला शेड लूँगी, क्योंकि ये ऑम्ब्रे है तो मैं ऊपर वाला नहीं उठाऊँगी, सिर्फ मैं भी ये शेड उठाऊँगी। इसके साथ अभी क्या अप्लाई करना है, मैं इसमें से बिल्कुल ही एक नेचुरल आइवरी कलर लूँगी बीच में इसको फिल करने के लिए।
चाहे मैं उसको फिंगर से बीच में पहले फिल करके स्मच करूँ या ब्रश से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर मैं उसको विद द हेल्प ऑफ द अदर ब्रश इसको स्मच करूँगी। Did you see the eye part look natural, not overloaded with other colors? It gives a natural look. Now, अब मुझे इसमें क्या करना है, इल्यूमिनेटर अप्लाई करूँगी बिल्कुल नेचुरल इधर, चाहे आप फिंगर से कर लें या जैसे भी कर लें। जैकलिन के आई के नीचे एक ब्राउन कलर का फिलिंग थी, चाहे आपके पास ब्राउन पेंसिल आप वो फिल कर दीजिए, आपके पास ब्राउन शेड है आप वो अप्लाई कर दीजिए। अब इसके जो इनसाइड दिस एरिया है जो आई के, उसमें बिल्कुल नेचुरल एक न्यूड फिलिंग है, तो आप उसको न्यूड, आपके पास आई लाइनर होगा या आई काजल होगा तो उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है सो इट्स नॉट अ इशू। सो मैं इसको बिल्कुल नेचुरली फिल करती हूँ। आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मैजिक आईलाइनर। जस्ट अ टच, क्योंकि उसमें प्रॉपर आईलाइनर की टोन नहीं आ रही है, वो बिल्कुल स्मोकी आ रही है, तो अभी हमें इसको स्मोकी करना है। So the smoke is almost ready in my eye, to my eye. This नहीं, जैसे इसमें आप देखेंगे गालों पे थोड़ा सा ब्राउनिश टोन है, सो मैं इसमें ये जो ब्राउन टोन है ये अप्लाई करूँगी चीक्स पे। ये मेकअप बहुत ही नेचुरल है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल नेचुरल ही कलर्स चूज करने पड़ेंगे। बिल्कुल नेचुरल लाइट पिंक ब्लश,
मैं ये वाला और इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। लिप्स पे प्राइमर अप्लाई करूँगी। दिस इज ऑल्सो दिस सेम ब्रांड कलर इंस्टीट्यूट का है ये लिप प्राइमर। सो आई एम गोना मिक्स इन 2 शेड्स, जैसे उन्होंने बिल्कुल नेचुरल शेड दिखाया है। सो मैं एक तो ये वाला अप्लाई करूँगी पहले। तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश टोन को ऐड करूंगी। लिटिल वेरी लिटिल। सुपर नेचुरल कर्ल्स हो गए हैं जैसे मैंने चाहा था। और इसको अगर आप थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे और डाल देंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। एंड सो दिस इज मी completely change, and hope you like my channel. So don't forget to like, share and comment.